Hello students, welcome back. I am Nidhi Goyal and in this video we will discuss about formal and informal organization. Formal and informal organization concept is in chapter 5, that is organizing. In previous two parts of organizing we have discussed about the features of organizing process and other concepts. So in this particular video we will discuss about formal and informal organization, and this is part 3 of my organizing series. So let's go ahead. See, there are two types of organizations, which are one is formal and one is informal organization. We have to understand, children, at this point of time, that formal and informal organization both exist within the business organization. यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई ऐसी कि ये अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल है, ये अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनफॉर्मल है. No, this is not the aim of discussing formal and informal here. The aim of this kind of organization is a group of people, the structure that gets created within a business environment. Business organization में firm में के अंदर एक formal organization structure होता है और कुछ informal organizational structures होते हैं. दोनों create होते हैं organization के अंदर ही. दोनों का पर्पस अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है और दोनों की the process of forming the organization is different. But यहाँ पर हमेशा हमें ये ध्यान रखना है that both of them gets formulated within the business environment only. Business organization के अंदर ही बनती है ये. ठीक है, तो let us see what a formal organization is. See children, formal organization, if you remember before we go ahead with this, कि हम लोग बचपन में एक लेटर्स लिखते थे ना, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर यूज्ड टू हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन यू नो देयर वाज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. एंड similarly there were informal letters which did not have any particular format, there was no language to it. Similar is the case of the formal and informal organization, जो इनका literal meaning है. Formal means you have a formal relationship in the organization. ये formal organization structure क्या होता है? Which follows superior subordinate relationship, which follows scalar chain of command, which is created specifically to attain the organizational objective, that has a specific authorities responsibility relationship. Formal organization is nothing but a structure or a network of the job positions which is formally created or deliberately created by the top management so as to ease the working of the business. Business की काम को आसान करने के लिए एक job positions होती हैं, तो formal organization वो होती है जो इन job positions को फॉलो करती है, स्केलर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को फॉलो करती है. Fine. So let us read what this particular definition says. Formal organization is a system of well-defined jobs with clear and definite authority responsibility relationship. This kind of organization of people strictly follows a scalar chain of command. This structure is deliberately created by the top management to realize the organizational objective. This is a conscious effort. See children, definition से समझ में आ रहा है कि formal organization उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को फॉलो करती है, जहाँ पर जॉब्स पोजीशंस बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड हैं, हर पोजीशन की एक अपना रोल है और आप उसी फ्रेमवर्क में रह के काम करते हो, राइट? इन formal organization or as a part of a formal organization you have to follow all the code of conduct and you have to fulfill all your responsibility and authority within that particular job position. ठीक है, आप उसी पोजीशन पे रह के काम करते हो, जो उस जॉब पोजीशन का रोल है वो आप निभाते हो. जो आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, आप अपने सुपीरियर को के साथ उसी तरह का रिलेशनशिप है आपका, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर्मल, वो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है विद इन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. Formal organization का ultimate objective is to achieve the organizational goal. Fine children. Now let us see the features of formal organization. Formal organization, it specifies the reporting relationship among various job positions. सबसे important होता है formal organization में कि कौन किसको report करेगा. Of course subordinate superior को report करेगा, तो ये subordinate superior relationship बहुत clearly established होती है. It aims to achieve organizational objective. इसका ultimate objective formal organization को create करने का होता है
organizational objectives को attain करना. It is deliberately created by top management. See children, we have to understand that top management is the people who creates this structure of job positions. The formal organization is created consciously and intentionally by the top management. It seeks to coordinate the efforts of various departments and various people. इसका purpose क्या होता है formal organization बनाने का? ये होता है कि जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सबको पता हो कि किसको किसके साथ कैसी बात करनी है, and they don't go beyond that job position and beyond that limits which is prescribed for that particular job, right? And its emphasis is on work performed. इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये एम्फेसिस होता है कि काम होना चाहिए, बिकॉज ये बना ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है? So this was about formal organization. I hope children you have understood कि formal organization क्या है. Now there are certain advantages of formal organization कि क्यों बनाते हैं? Because it is easier to fix responsibility since a reporting relationship is clearly defined. क्योंकि सबको पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इट इज इजी टू फिक्स कि अगर काम नहीं हुआ है तो आप बता सकते हो या आप फिक्स कर सकते हो कि दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव नॉट डन दिस वर्क प्रॉपर्ली. It avoids duplication of work as duties and responsibilities are clearly defined. क्योंकि हमने हर जॉब पोजीशन की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करके रखी है पहले से ही टॉप मैनेजमेंट ने कि ये पर्सन इस जॉब पे रह के ये काम करेगा, तो इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता. It enables the use of unity of command. Unity of command, if you remember, that was a principle in the Peel's Principles of Management in chapter 2. You remember? तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि unity of command is the principle which says कि one boss should command the subordinate. A subordinate should not get orders from different bosses. More than one boss से command order नहीं होने चाहिए किसी subordinate को. तो ये help करता है आपको unity of command को maintain करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि reporting relationship is the basically children you have to understand कि ultimate base कहते हैं ना नीड या फाउंडेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है? तो यूनिटी ऑफ, क्योंकि सबको पता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का यूज पॉसिबल होता है. इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, दैट्स क्वाइट क्लियर. And next is, it checks the behavior of the employees as it is guided by the rules and regulations of the organization. क्योंकि rules and regulations are clearly defined for every job position, so behavior of employees is guided by those rules and regulations. These were the advantages of formal organization, children. There are certain limitations also which formal organization suffers. So, number one is may lead to delay in the procedures as strictly scalar chain is followed. Because scalar chain formal organization में बहुत strictly follow होती है, तो कभी-कभी delay हो जाता है procedure में, because it has to follow. अगर आपके ऊपर 4 bosses हैं and the decision is to be taken by the top people, so the particular suggestion or a feedback will follow 4 different people and then it will lead to the person who is going to take decision. तो ये इसीलिए कभी-कभी डिले हो जाता है, या टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आया, वो पास होते 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 सुपरवाइजर तक आते आते देयर आर 4 or 5 पीपल इन बिटवीन इन द स्केलर चेन, तो वो सबसे पास होके आएगा, तो देन इट विल लीड टू डिले. It is a rigid organization as policies are strictly followed. आप ये rigid है, it is not flexible, मतलब it doesn't give any independence to the people to change the policies. It is difficult to follow complete formal organization. Complete formal organization follow करना बहुत मुश्किल है, because it is very difficult to make the people strictly work and strictly adhere to the rules and regulations. It ignores social needs of the employees. अगर कोई organization pure formal organization है, तो वहां पर social needs of the employees are ignored. मतलब they are not allowed to talk on any other matter apart from the business. Organizational objective के अलावा अगर कोई भी बात है, तो they will not be allowed to talk. They will not be allowed to talk from with different people. वो सिर्फ अपने superior subordinate के relationship में ही बात करेंगे, वो they cannot talk to other people. तो उनकी जो social need है, because we know every individual is a social animal, they need to talk and mix in the society, तो वो need ignore हो जाती है. And last is more emphasis on work only. काम पे ही ज़्यादा दिमाग है, काम पे ही दिमाग है, बस you have the emphasis is only on the work done. Work is to be done, ऐसे करना वैसे करना, बस काम होना चाहिए, nothing else.
So this was all about formal organization, children. I hope I have made it clear to you. Yes, let us move ahead with informal organization. Informal organization name suggests that there is no fixed authority responsibility relationship. There, you do not have to follow the scalar chain. If you want, you can. If you don't want, you can skip. It is basically uh, a chain or a network of social relationships between the people. Formal organization was a network of job positions, right? And informal organization is a network of social relationships and personal relationship जो अपने आप एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय बनाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वो आप जब वर्क प्लेस पे होता है तो ही टेंड्स टू टॉक विद 10 डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज एंड ऑफ डिफरेंट स्टेचर, राइट? तो जब वो अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों से बात करता है देन ही इज फुलफिलिंग हिज सोशल नीड्स, right? So he develops some social relations with the other people also, and that framework is called informal organization. Let me give you an example of your school only, right? Your school, let's say the formal organization of a school, formal structure kya hoga? Your chairman or your board of directors, right? चाहे president हो या directors हो, different schools have different people. Then your principal, vice principal, then your headmistress or HODs or coordinators, whatever may be there in the organization. Then you have class teachers, and then you have subject teachers, right? So then this particular chain of the positions is a formal organization. So there is one teacher who teaches, let's say, business studies, like me, and there is another teacher who teaches chemistry, right? So both of them are, they, if they want to talk with each other related to the school, then they will first talk to their immediate HODs, and then somehow they will talk, and they will not be talking apart from the school business, right, or students or the syllabus and curriculum. But during the lunchtime, both of them sit together and they discuss something else, and they talk on social issues and personal issues, right? And both of them have somehow, let's say, developed a kind of a friendship. So that is an informal organization which is created within the formal organization itself, right? तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाते हैं अपने आप, डिपेंड्स ऑन जिनकी सोशल या पर्सनल फीलिंग्स आपस में मैच करती हैं, सोशल नीड्स मैच करती हैं, इनकी रिलेशनशिप्स आपस में अच्छा रहता है, तो वो अपने आप बन जाती हैं. देयर इज नो कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट कि ये टीचर इसकी फ्रेंड बनेगी, ये एम्प्लॉय इसका फ्रेंड बनेगा. नो, ये चार लोग इकट्ठे बैठ के बात करेंगे. नो नो, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप के इंटरेस्ट जिसके साथ मैच करते हैं, यू गो एंड टॉक विद दैट पर्सन रिलेटेड टू एनी सोशल और पर्सनल इशू. दैट इज अ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है? और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल इट. Let us read, and then we will be able to understand it better. See, informal organization is an aggregate of personal and social relations which arise spontaneously because of association of people with each other. See, I told you कि because लोग आते हैं कंपनी में या बिजनेस में, फर्म में आके बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, so they develop a social relationship, fine. An informal organization is a network of interpersonal relationship in the organization without any conscious effort or purpose. कोई कॉन्शियसली एफर्ट नहीं क्रिएट होता कि ये पर्टिकुलर पर्सन इसका फ्रेंड बनेगा या ये इनका आपस में इंटरेस्ट मैच करता है, ये कॉन्शियसली नहीं होता. दिस इज ऑल spontaneous. It arises automatically on its own within the organization when employees interact with each other. It helps to fulfill the social and psychological needs of the employee. ये सबसे important है कि social needs या psychological needs या personal needs of interacting with people या to be friendly with other people, ये जो need है ये informal organization में fulfill होती है, right? एक और बहुत important बात है जो आपको इसमें याद रखनी है, that informal organization creates within the formal organization. If there was no formal organization, then there was no informal. क्योंकि formal organization नहीं होती तो people नहीं होते, employees नहीं होते at different positions, और employee नहीं होंगे तो फिर वो आपस में interact नहीं करेंगे तो there will not be any informal organization. Let's move ahead, children, with the features of informal. We have discussed a lot about informal, so we will just quickly go through them.
It originates within the formal organization as a result of personal interaction between the employees. I just discussed this point. It does not follow scalar chain of command, rather follows group norms. ये स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करती. ऑफ कोर्स यस, कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ ऑफ व्हाटसोएवर जॉब पोजीशन ही में भी, एक सुपरवाइजर कैन बी अ फ्रेंड टू अ मैनेजर, director can have an informal relationship with, let's say, a manager of the different department of same department. There is no scalar chain that needs to be followed. There is no particular direction of flow of information, of course. Otherwise formal organization में there is a flow, upward flow होता है, right? कि subordinate से superior या superior से subordinate में बात होती है, जाती है. There is a communication like that. But इसमें कोई particular direction नहीं होता. It emerges spontaneously and it is not deliberately created. ये अपने आप ही बनती है. इसमें like there is not any specifically deliberate effort to create it. It does not aim to attain organizational objectives but personal objectives. This is again very clear. It is a network of social relationships among employees and has no definite structure. ठीक है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपने आप लोगों ने आपस में मिलके बना ली. ठीक है. Now advantages of informal organization. Faster spread of information through grapevine. इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि इससे इंफॉर्मेशन फास्टर ट्रैवल होती है. एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के साथ अगर बैठ के सपोज लंच कर रहा है, तो एक डिपार्टमेंट की बात दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर उन्होंने अनइंटेंशनली सिर्फ शेयर करी है तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है. देन it fulfills social and psychological needs of the employees. Of course, I told you earlier also that every individual employee wants to talk and be social, mix up in the social environment. So वो need उसकी पूरी होती है employee की within the informal. Correct and faster feedback relating to employees and from employees. इसमें क्या होता है, informal organization है तो employees के साथ अगर आप friendly हो, लेट्स से आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ फ्रेंडली हो, एंड देन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज आल्सो एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज आल्सो, बोथ द एस्पेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज disadvantages of informal organization. It spreads rumors which may mislead the employees. That's very true कि rumors भी होते हैं. जब हमने कहा यहाँ पर कि grapevine के थ्रू स्प्रेड हो जाती है information, तो कभी कभी rumors भी हो जाते हैं जिससे दूसरे employees mislead हो जाते हैं. It restricts the growth of organization as employees may use it to oppose the organizational policy. कोई organization policy बनी, employees ने आपस में ग्रुप बनाया और उसको अपोज कर दिया, तो क्या होगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. एंड इट डज नॉट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो दिस informal structure or informal organization does not lead to attainment of any organizational objective. Fine, children. So let's move ahead with the differences of formal and informal organization. Now see children, formal organization meaning we have already discussed earlier in the earlier slides. Let us quickly do it. An organization type in which the job of each member is clearly defined, whose authority, responsibility and accountability are fixed, is a formal organization, right? जहाँ पर responsibility authority relationship और clearly defined है, वो formal organization है. An organization formed within the formal organization is a network of interpersonal relationship. When people interact with each other is a informal communication or informal organization. Creation. Formal organization is deliberately created by top management. Informal organization is spontaneously created by members itself, right? एक तरह से ग्रुप होता है informal. Suppose employees हैं, बहुत सारे employees काम कर रहे हैं, उनमें से 4-5 लोग आपस में सब बात करते हैं, 4 को रियलाइज हुआ कि they discussed and they found out कि सबकी हॉबी है म्यूजिक, तो उन्होंने एक अपना म्यूजिक ग्रुप बना लिया कि ठीक है, कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट हुआ तो हम मिलके we will perform. That is a informal organization. Okay. Purpose is to fulfill ultimate objective of the organization. Informal का purpose है to satisfy the social and psychological needs. ये सारे points हम features में पढ़ चुके हैं, so that is why I am taking them little quick. Nature is stable, it continues for a long time. Informal का not stable. क्यों? क्योंकि organization में एक structure of job positions बनाया हुआ है, so that's going to be there till the organization or till the time top management
reviews it and changes it. Informal में आज informal relationship है किसी के बीच में, कल को नहीं भी हो सकते. वो person leaves the organization, वो खत्म. या they today they are very friendly and 5 of them are very friendly and meeting each other. After a few days they might change their groups and they might start talking to each other, to different people. So that is what the informal organization is. So it is not very stable for a long time. Communication is official communication hota hai, only related to business aspect. Informal mein grapevine hota hai. Grapevine is a term that you will want to study in more detail in further chapter. Grapevine hota hai jaise grapevine hoti hai na अंगूर की बेल, राइट? तो अलग 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 डायरेक्शन में अपने आप फैलती चली जाती है. देयर इज नो स्पेसिफिक फ्लो कि सीधी जाएगी या ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी. तो इसी तरह से कम्युनिकेशन है, किसी भी डायरेक्शन में जब इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेपवाइन, राइट? कंट्रोल मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द वंस आर द थिंग्स दैट guide the formal organization, or informal organizations are guided by norms, values and beliefs. आपस में ग्रुप नॉर्म है, ग्रुप की वैल्यूज हैं, एक दूसरे की बिलीफ है, उससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होती है. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होती है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस से. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है वर्क परफॉर्मेंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. क्लियर? अथॉरिटी के बेसिस पे इफ वी डिफाइन, formal organization members are bound by the hierarchical structure. मतलब formal organization में there is one superior, another is subordinate, like all of them cannot be at same position. Informal में all members are equal. अगर एक ग्रुप बना है 5 लोगों का, उन्होंने अपना they are performing some hobby, या वो वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं, या मे बी दे आर परफॉर्मिंग म्यूजिक, या सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो दे आर इक्वल एट दैट टाइम. अगर लंच में सब एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, एक तरफ डायरेक्टर भी है, वहीं पर मैनेजर भी है, वहीं पर सुपरवाइजर भी है, तो दे आर ऑल इक्वल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है? एंड कंट्रोल मैकेनिज्म आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. चिल्ड्रन, आई एम सॉरी दिस इज रिपीटेड. So I hope children you have understood what the formal and informal organization is, right? This is very important from the exam point of view also, and otherwise also to understand what the formal and informal organization is, right? So children, with this I end this presentation and this slide, this particular PPT. So if you have liked this video, please press like button, and your feedback is you can write in the comment box. So I'll be back with next part of the organizing. Till then, stay tuned. Thank you.